को अच्छा लगता है क्यों हम ज़्यादा पढ़ाई करते, सब अच्छे होता है। सब मम्मी पापा बोलते कि तू अच्छा करेगा सब दिन। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बुरी फीलिंग्स भी आती है, क्योंकि अगर बच्चों को बार बार टोका जाता है, और अच्छी फीलिंग्स इसलिए क्योंकि बचपन ही ऐसा चीज़ है जहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रीडम, व्हेन आई वाज किड दैट वाज द गोल्डन डेज। जैसे पंछियों की तरह उड़ो, सिर्फ पढ़ाई करो, खेलो कूदो। कलेक्शन करना, अलग अलग ड्राइंग्स के अलग अलग जो इंडियन आर्टिस्ट है, वेस्टर्न आर्टिस्ट है, उनका कलेक्शन करना, पेपर कटिंग, इवन डिफरेंट स्टोन्स वगैरह भी, वो भी कलेक्शन करने का मुझे बहुत शौक था। माझा म्हणजे अगदी लहानपणापासून मला पोहण्याचा छंद होता। नदीच्या पलीकडे आमची शेती असायची, मग ती कधी शेताकडे गेल्यानंतर अचानक पाऊस पडला की नदीला पाणी यायचं, आणि त्यामुळं गावामध्ये यायला मला पूर्वी पूल किंवा इतर कोणताही एक वेळ अशी होते की पोहताना मी पाण्याचा मला अंदाज आला नाही, त्यामुळं मी पोहत खूप दूर गेलो, पण पोहून त्या ठिकाणी मी एका झाडाच्या फांदीला धरून, आणि तेव्हापासून ते आज अखेर मला पोहण्याचा छंद मी जोपासलेला आहे। मेरी ये विश है कि हमें छोटे कपड़े पहनने से कोई रोके नहीं, दादा दादी सोसाइटी वाले। हम हर कुछ कर सकते तुम, लेकिन बोलो सिर्फ, हमें सपोर्ट दो, थोड़ा तो दो। हम चाहते हैं बच्चे आगे बढ़ सके और कुछ करके दिखाए। खेलना चाहिए बच्चों को, पढ़ना चाहिए, भविष्य में कुछ तो होना चाहिए, अपने घर में ऐसे प्राउड फील होना चाहिए हमारे घर में भी। Thing that I definitely hope for is that my child self would have an adult who would just be there, who would understand my perspective as a child, who would be a champion, who would be standing behind me as a champion, and that's something that motivates me to work in education. Something I would change is about the messaging we get as kids, even if it's not the primary adults in our life. Just generally we are told that certain behaviors make us a good child and certain behaviors make us a bad child. I don't think we should have those we shouldn't impose those on children. मुलांच्यासारखं बनण्याची पुन्हा इच्छा होते, पण ते शक्य नाही। मुलांच्यासारखं प्रामाणिकपणे बोलणं किंवा सतत प्रसन्न चेहरा। एक्सरसाइज। Study more. Children spend more time with family, but adults don't spend more time with family because they come to home to feel relaxed, but they don't spend time with family. If we can't spend time with family, how can we get relaxed? My favorite lesson from students is that being outspoken. Being adults, sometimes we tend to limit ourselves from being outspoken or speaking. I think resilience, they go through so much and they still manage to show up with bright smiles and just manage to just be themselves also, which is pretty amazing. Small things, the joy of sharing is something I've learned from kids, whether it be like a chocolate they come give me in the break, or share some stationery with each other, or share really big feelings and thoughts. I think children are when they are there in the classroom, they are the most unfiltered selves. They readily are expressing their emotions. There is sometimes that they are resistant, but as you get to know them, they freely express what are they feeling, what do they like, what do they dislike. ग्लोबल हेल्थ इश्यू हे सबसे बड़ी प्रॉब्लेम आहे। स्पेशली इन इंडियामध्ये आपण खूप पुअर पीपल बघितले, त्यांच्यासाठी एड्युकेशन, त्यांचे काय नीड्स आहेत ते पोचत नाही आहे त्यांचे। There is a fight between Israel and Palestine. We are facing that fight. Discriminating between genders and comparing each other, like girls cannot do this and boys cannot do this. Example, girls can't go for job and boys can't wash utensils or do household chores. Because the best day, being those unfiltered self and not worrying about anything.
कारण की स्वतः म्हणजे टाईम घेतात ते, म्हणजे स्वतः एक्सप्रेस करतात तेव्हा. मग ते खूप एन्जॉय करतात. त्यांचे जे आतमध्ये जेवढ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते पूर्ण बाहेर येतात. मग ते एक्सप्रेस करतात त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी. Children's Day to listen children's. That I know that elders did not listen to children's, but one day we should listen to children's. So like celebrating Children's Day is a big deal because it's like about celebrating the child inside you, which like never dies. There's always a child inside you, even if you're an adult. We celebrate Children's Day for children's freedom, and children's get one free day from study. Because they're children, they're precious. They do so much for the world around them. They have so much to offer. So I think honoring them just makes sense to really, I think, cherish, to value what they do for us, how much we learn from them. बाल दिन हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि बच्चों को खुशी भी होती है, उससे खुशी होती है. और बाल दिवस के दिन हम अपना सब चीज़ टीचर से या किसी से शेयर कर सकते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है. बाल दिन क्यों साजरा करते हैं कि हम सब लोग बड़े हो जाते हैं, पर बचपन बाद में नहीं आता, इसलिए बाल दिन साजरा करना चाहिए.